everyone, how are you doing? I hope everybody is doing well. So Launchpad Vsmart के अंदर जो अपना सीरीज चल रहा है लाइफ स्किल्स द जर्नी, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, बहुत सारा टेक्निकल प्लस सॉफ्ट स्किल प्लस लाइफ स्किल्स के बारे में बात होगा। तो आज लेके आ रही हूँ डॉक्टर अमृता। H.M.S है आपने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है साइकोलॉजी में, आप NLP प्रैक्टिशनर प्लस कोच भी है। आपने 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स वन ऑन वन आपने मेंटरशिप किया है। प्लस इफ इट इज नॉट जस्ट इनफ तो आप हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर भी है। उसके साथ शी इज मैरिड टू CA। दैट्स हाउ आई नो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट CA के लोगों के साथ जुड़ता है। शी इज अ मदर ऑफ 2 यंग डायनामिक किड्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ ना एक स्पेसिफिक हमारे में क्लोज टू आवर हार्ट्स, इजंट इट। तो फॉर ये मैं ना हमेशा से मेरे GMCs में जब भी कंडक्ट करती थी, इंस्टीट्यूट में मैं जब भी जाती थी, तो मैं ये जरूर लेती थी कि यार मान लो हमें एक ना फिनिशिंग पॉइंट दिया है एंड मैं कुछ 5-6 लोग इंक्लूडिंग मी, मैं बोलती कि यू नो व्हाट गाइस, डू योर बेस्ट एंड टच द फिनिशिंग लाइन एंड कम बैक। ऑलराइट। तो मैं जैसे ही ऐसा बोलती थी एंड मैं बार बार बोलती गाइस डू योर बेस्ट, ओके, डू योर बेस्ट, टच दैट फिनिशिंग लाइन एंड कम बैक। तो आपके दिमाग में क्या होता है जब जब कोई बोलता है कि अच्छा वो फिनिशिंग लाइन टच करना है, वापस आना है, तो क्या मतलब होता है? तो स्टूडेंट्स मुझे हमेशा बोलते थे कि डू योर बेस्ट मतलब मेरे मन में ये है कि मुझे वो फर्स्ट पोजीशन लानी है, इजंट इट? लेकिन डिड आई टेल यू टू बी देयर फर्स्ट पोजीशन? नो, आई सेड डू योर बेस्ट, टच द फिनिशिंग लाइन, कम बैक। उस दिन अगर यू आर नॉट इन टू योर बेस्ट ऑफ योर फिजिक, शायद आपके पैरों को कुछ लगा है, कुछ गड़बड़ है, तो टचिंग दैट फिनिशिंग लाइन एंड कमिंग बैक could be your best performance। बट तो ये अपने दिमाग में क्यों आता है कि यार पहला ही आना है, मुझे मुझे वो पोजीशन फर्स्ट ही चाहिए? क्यों पता है आपको? क्योंकि अब कहीं तो भी बचपन में किसी ने तो भी हमें बोला रहेगा कि अरे वाह तुम पहले आए, वेरी गुड, यू आर द बेस्ट, है ना? तो वो ब्रेन में मैपिंग हो गई कि अच्छा फर्स्ट पोजीशन लाना इज इक्वल टू बेस्ट होना। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये अपना थोड़ा सोसाइटी का ड्रॉबैक भी है। तो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई यू नो वांट टू टेल यू, जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी एक चीज देखिए जो आई थिंक यू कैन रिलेट इट रियली वेल, इज दैट कोई ना एक सामने से इंसान आता है जिनका कभी तो आपके साथ कुछ तो बिगड़ गया होता है एंड देन यू फील ओ माय गॉड, ये अनोइंग, ये इरिटेटिंग पर्सन फिर से आ गया। यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड विदाउट दैट पर्सन अटरिंग अ वर्ड। या फिर कोई वहां से आता और आप बस आहा हा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज इट ऑल अबाउट, राइट? सो आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अमृता जो होम्योपैथ के डॉक्टर है। तो इनको काफी सारा लोगों के इंटेलेक्ट या फिर जो भी अपने लेवल्स रहते हैं उनके बारे में वो पढ़ते हैं एंड देन दे गिव द मेडिसिन या फिर हीलिंग होती है। प्लस उन्होंने फिर NLP टेक्निक किया था। तो आई हैपन टू आस्क यार अमृता ऐसे क्यों होता है? अगेन अमृता इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कुछ 15-17 सालों से मुझे वो झेल रही है हिप्नोसिस, इसीलिए शायद उनको करना पड़ा कि मैं मुझे वो चुप करा दे। सो दैट्स अबाउट इट। वी ऑफ लेट, आई मीन आई रिमेम्बर हम साथ में कभी तो वो उनकी पढ़ाई करते थे और मैं भी अपना CA का पढ़ाई करते थे। तो देन वी हैपन टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्यों ऐसे सर्टन बिहेवियर होता है, सर्टन सिनारियोज में हम सर्टन इससे रिएक्ट करते हैं, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? एंड शी स्माइल, ओके। तो ये स्माइल का राज जानने के लिए आज NLP टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है वो जानने के लिए मैंने उनको यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू डॉक्टर अमृता फॉर कमिंग हियर। एंड आई नो आई एम प्रीटी श्योर आपकी ये जो भी आपने ओवर द 15 years of your career in BHMS हो या फिर आपका ये साइकोलॉजी का आपने जो किया है, तो इसका और जो आप मेंटरशिप प्रोग्राम किया है, दिस इज अ ग्रैंड सक्सेस आई वुड से कि वन ऑन वन बेसिस पे आई vividly remember the number, it is 1523 or something, that was the greatest batch recently you covered. तो वी वुड डेफिनेटली लाइक टू नो अबाउट व्हाट आर द NLP टूल्स एंड टेक्निक्स। कैसे हमें पढ़ाई करते वक्त या फिर एग्जाम्स देते वक्त या फिर नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में, हाउ कैन वी अ बेटर पर्सन यूजिंग दिस NLP टेक्निक्स? सबसे पहले
what is NLP technique? If you can tell your story, your journey, anything and everything is, what you think is helpful to students. So we are eager to hear. That's so nice. Hello, everyone. And hello, Saidi. So, yes, this is Dr. Amruta Shingavi. What is NLP? NLP is Neuro-linguistic programming. It is a very vast topic and an amazing topic. So when we talk about neuro-linguistic programming, it is nothing but it is a way of life. कि तुमको जिंदगी कैसे जीनी है. When we talk about zindagi, na, we all cover all the 9 quadrants of zindagi. कि कैसे कैसे it can be your lifestyle, it can be your education, your money, your finances, your relationship, it can be anything. So how we are managing all the 9 quadrants of life with NLP, that is neuro linguistic programming. So when you said ना, आपने जब starting में बोला ना वो किसी को आप GMCS में से बोले थे, I just like that example, beautiful story, beautiful example you gave, and so true. That is, whenever we see someone, we get a map बना लेते हैं, हम लोग हमको आदत है, and we are not doing it consciously. It always happens subconsciously. So subconsciously हम लोग वो image बना लेते हैं. So what NLP always tell is never make a map of something. Suppose whenever you're meeting a person, meet as if you're meeting first time. It can help you in many ways. Okay, absolutely in many ways. When you're meeting your professors, या आगे चल के girlfriend है, boyfriend है, जो भी है, so it can help you in many ways. So NLP can help you in transforming your life completely. This is what I would like to tell you about NLP. Okay, and as little I know is that it is a scientific study that a few scientists came together, and it is a model, like a basis on the behavioral study that we it's about the human ki jo ek formulate karte aaye hai certain way से. So how that can I mean अगर students को हमें देना है कि ये NLP technique है, everybody can go and Google it up about its history, but अगर come back to the point that how NLP techniques help students, like in what way study करने में कैसे हमें help हो सकती है. Okay, so this is nice. What you said is yes, NLP is modeling. What the scientists came together and they did modeling of all the experts in that particular field, and they came up with tools and techniques. So when we talk about students, so suppose now you're telling कि students के लिए कैसे benefit हो सकता है. Let me give you a very simple example. Today, if you decide कि okay, now I want to settle in my life, I want to decide what I want to do. So आज मैंने plan कर लिया कि मेरे को CA करना है, तो मैं कल जाके तो exam देने को बैठने नहीं वाले हैं. You need to read those books, you need to learn and do everything, right? Similarly, when we are doing it NLP, you need to make a particular timeline for your practicing or for your CA examination or in anything in your life for that matter. एक पर्टिकुलर टाइम पे हर चीज होनी चाहिए, तो उसको एक टाइमलाइन हम बोलते हैं कि ये इस महीने में ये, उस महीने में ये, एंड देन यू कवर अप दैट 6 months. So you are similarly when you are studying in that particular way, you need to do NLP in that particular way. If you are talking about anxiety, if you are talking about stress during examination, or how to study before your examination, when you are starting to study also, कि किसका कौन सा पैटर्न है or how you're supposed to study, that can be a beautiful technique. One of the few tools you can use for the students with whoever fraternity it may be CA, it may be doctors, it may be any fraternity, but there is a particular pattern. So this is how you need to study, how you need to go ahead. So timeline bana ke, so what is timeline? We can have a better discussion on it. Okay, so you mean we have to have that vision board in front of us, that scheduling, and then you have to look forward and follow that tranches, that अच्छा मैंने DT अभी पढ़ना है, IDT अभी पढ़ना है, costing ये करना है, इसके classes वो करना है. So you have to have the vision board existing, and आपका end result के कितने आपको marks चाहिए. Of course 200 भी मिल गया, so भी बहुत हो गया. So I got you, Sai. अब जब बोल रहे हो ना vision board, it can be a particular map of yours. Now you are a visual person, इसलिए आपने बोल दिया vision board. If a person is auditory ना, तो वो कुछ बोलेंगे okay, it is sounding like that.
So NLP is diagnostics. I mean, ये diagnosis word medical fraternity से आ गया actually. So diagnosis, what kind of person you are and what can be the way of your learning. When you said vision board, इसका मतलब ये है कि okay, Sally is a visual person. She needs something to see. Oh, is it? Okay. So whenever you, yeah, that's so nice. So this is a magic of NLP practitioners, ना कि वो पहचान लेंगे कि आप बात कर रहे हो ना उसमें से पहचान लेंगे कि okay, this person, all there are five sense, okay, five sense organs. Let me go in bit of detail of this. There are five sense organs. That is visual, auditory, kinesthetic, olfactory, and gustatory. Okay. So हम लोग जब ये करते हैं, whenever we are talking with an NLP practitioner. So student will talk in a particular way and every person has something dominant during that time. I won't say कि सब चीजें ऐसे इंटरनेट होती रहती है पर किसी किसी का पर्टिकुलर तो you have seen किसी किसी को सुन के याद रह जाता है they can write it down, right? किसी किसी को need an hardcore book, they need to touch that book to read. You need it. See, you're more of visual and kinesthetic then. So you need something hardcore book. You need a book which can read it. So that is a kinesthetic part of it. कुछ तो touch होना चाहिए. So whenever you're writing a paper during your examination, तुमको वो book का book दिखाई देगा and you can write it down. You can see that when a person is visual, you can see those pages, you can see those lines, and it is if a person intellectually also very well, they remember the page numbers also. My father usually remember the page numbers of the books what he used to read. So he's visual and kinesthetic. So it is everything is dominant. A particular part is dominant in each and every individual. Now you need to understand yourself. Ki how, what part of your, what sense of your is the most dominant. Some need the smell of those particular books to remember the things. They might not know also. कि अच्छा मेरे साथ ऐसे हो रहा है. But this is all play of subconscious mind. So we are talking about vision board. Okay, for you it can be a vision chart, but it cannot be vision chart for everyone. When we say timeline, it can be a generic thing. Time pe ye. So it can be anything. It can be matching to an auditory person also, to a kinesthetic also, to a gustatory person also. So about this that I'm a vision plus kinesthetic person. So I would can we do one thing, Dr. Amruta, if you can give us some kind of document where our viewers can understand what are their predominant what we say the choices or maybe the predominant preferences subconsciously. We don't know that, but what are the predominant behavioral aspect that our viewers can have and that they can see for themselves. See, again, I'm using the word see for themselves, right? It is making me conscious. So now so they can vouch for themselves that which particular tranche their predominant behavior. Are they a kinesthetic person या फिर कोई जैसे बोलते कि सुनने से तो कोई गाना चला दो, गाना चलाने से तो फिर आप ट्रांस में चले जाते हो, दे से राइट कि अरे वो गाना और फिर वो जो फीलिंग मैंने की थी, सो वहां पे आई कैन रिलेट विद दोज स्टफ. सो माय डियर व्यूअर्स, डॉक्टर अमृता, इज इट पॉसिबल इफ यू कैन डू दैट? So please provide us. I will send you some PDF or something like that so that you can attach it with. I'll surely do that. Nice. So that you understand what kind of person you are, and by using those kind of beers, once you understand, once you state yourself. See, I'm repeatedly telling you कि उस time के लिए आप वो हो. It can be any predominant state. यानी जरूरी नहीं every time it is a vision only or it is a kinesthetic, but that would give you an idea how you can study your CA ka exams, or when you are studying for your CA examination, what thing you should keep in mind that can give you an amazing results. That'll be superb stuff here, guys. Watch in the comment box. I'm going to attach it as soon as I get it. So मैं ये जो Dr. Amruta से आएगा तो फिर I'll be able to post it there, and then you can you can go through it. If you have any question, if you think this relates to me, so please let us know. So even we are learning, even we are forming our opinions about this, right? तो ऐसा है तो your
क्या बोल सकते हैं, आप जो देख रहे हो, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये वैल्यू एडिशन ही होगा इसके लिए. सो फैंटास्टिक, दैट वाज आई बिलीव द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड नो योर क्राउड इज जनरली व्हाट आई से व्हेन वी गो टू एनी सेमिनार्स और वेबिनार. यहाँ पे मैं बोलूंगी नो योर सेल्फ फर्स्ट, नो योर सेल्फ, दैट हु यू आर, व्हाट आर योर प्लसेस एंड माइनसेस, एंड क्या आपको पुश कर सकता है, क्या पुल डाउन कर सकता है. सो इफ यू नो the tips and techniques, so that's that first thing first. Apart from that, Amruta, can we know some general, like not getting deeper, because I'm sure looking at time, जो अपने पास आधा 15-20 मिनट आधा घंटे का टाइम है, उसमें एनएलपी कवर होना इज इम्पॉसिबल. तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी जहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, ग्रैन्युलर लेवल पे डिस्कशंस होंगे. बट अभी ये इंट्रोडक्शन हो रहा है कि व्हाट आर द एनएलपी टेक्निक्स एंड कैसे हमें स्टूडेंट के लाइफ में ये कैसे बदलाव ला सकते हैं. तो कैन यू प्लीज एनलाइटन अस विद फ्यू ऑफ मोर टिप्स एंड टेक्निक्स जो इजीली अवेलेबल है, दे डोंट रियली हैव टू फॉलो व्हाट एनएलपी इज ऑल अबाउट दो. तो दैट विल बी ग्रेट फॉर अस. That would be great. I would love to do that. So when I said once you see the PDF, you understand what kind of person you are, what is your predominant sense organ, which is helping you to do it. And this is all, subconsciously. Okay, it is not you're doing it consciously. So if you're a visual person, then you can use more of graphical designs or more of something like that. Okay, I have a very beautiful technique which is known as an anchor technique. For those who are kinesthetic, okay, anchors can be formed in any of the technique, but those who are kinesthetic, when I say kinesthetic, it is always touch. Okay, touch is kinesthetic. So if you are studying a particular subject, am I audible and clear? Yep. Okay. So if you're a kinesthetic person, you can do this technique which is known as an anchor technique. Okay. Suppose I'm reading a lesson. If you're a right-handed person, you can always use your left hand. Okay. मुझे पता है कि मुझे ये आने वाला है. This is an important part for you. I'm getting into a concentrated state of mind. When you start getting into a very concentrated state of mind, concentration कर रहे हो, you are learning the lesson. Start pressing this index finger and the thumb finger together. हाँ, ये ज्ञान मुद्रा जो हम लोग बोलते हैं ना, you can use any of the thing, but this is one of the best. You use one hand. Okay, why I'm telling left hand? Because we write with our right hand, and if you are a left-handed person, you can use it a right hand. Okay, so if you're doing it, we need to go in this deeper. So when you're into a peak concentration state, let it go very fast. Okay, जब आप peak concentration में हो, तो ध्यान रखो कि ये करने से चालू कर दो. And you're kinesthetic person. So whenever in future, if you do it 10 times, if you do it purposefully, whenever you're in a very good concentrative state, so in future, whenever you want to go into that beautiful state of concentration, हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को concentration करो, कैसे करो कोई नहीं बताता है. So this is one of the technique. तो वो जब भी आपको immediately जाना है, you don't have much of time, exam का पहला दिन है, you have to concentrate, you have to learn, go directly press this because you have done it prior, and you do this, you are into the kinesthetic anchor, and you're into the concentrated state of mind. Similarly, when you're writing exam, you can do that also. This is again a jnana mudra when they are meditative stage. जब हम लोग meditation करते हैं ना, तो usually ये particular हो जाता है. But when we are pressing it up and down, we are purposefully doing it to increase the anchor. So this is one of a beautiful technique for kinesthetic as well as any other person can do it. Okay. This is again an anchor technique. Okay, now if I can talk about one more technique is affirmations. मेरे को लगता है affirmations के बारे में तो सबको पता होगा. So what are affirmations? Affirmations are present positive tense sentences. Okay, present tense positive tense sentences affirmations. How it is different? Yes, how it is different than the affirmations that we know. I mean, इतना ज्यादा नॉलेज है ना कि हाँ ये affirmation बोलो, ये affirmation बोलो. तो do you want to tell a little bit about it? कि ये और NLP टेक्निक का कैसे करेंगे? हाँ. Yes. So affirmations का working कैसे होता है? It is working on the matter of law of attraction. Okay, present positive tense sentences में काफी बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग कुछ बोल रहे हैं, बट हम लोग बिलीव नहीं करते. I don't believe that I am loving, but I have to say that affirmation कि I am loving. तो वो कैसे आएगा ना? नहीं आएगा. So you can use a nice magic mirror technique in it.
What is magic mirror? Stand in front of a mirror, look into your eyes, and only in your eyes. No looking on your pimples, no looking on your wrinkles, no looking on your lips and nose, nowhere else. आंखों के ही आंखों में देखना है. This is again a modeling technique. And once you're concentrating only on your eyes, start saying those affirmations. Starting में difficult जाता है. बहुत बार तो इंसान रोने भी लगता है क्योंकि मिरर के सामने आप झूठ नहीं बोल पाओगे ना. But because you're talking to yourself and you know what you are. But when you want to develop something, you need to compromise. You need to come out of your comfort zone. So this is coming out of your comfort zone. Taming your mind. Ki, yes, I am loving. I am caring. I am intelligent. So this affirmations, magic mirror technique can work you. Okay, affirmations are to be done. If you are telling one affirmations, you can aram se talk about 1,000 times in a day about one affirmation. So whatever, if you're having a group, always make a group of affirmations. Never say only one affirmation. And it cannot be generalized for everyone. It has to be particular for that particular person. जो साइली दी को लग रहा है कि this is affirmation right for herself, probably I may not be having that affirmation for myself. It should be always a particular customized group of affirmations made for yourself, thoughtfully made for yourself with a positive present tense, not future, not past. Only positive present tense sentences. I am loving. I am helpful. I am healthy. I am careful. I am concentrating. I can is wrong the word. I am concentrating. I am working. And I am a chartered accountant. Doing it. I am a chartered accountant. Right? So that's how I believe we have to kind of say ourselves. So yeah, I mean, going back to this Chin Mudra or Gyan Mudra, which I wanted to say, is like, is it some kind of signal that they pass? I mean, your body understand, okay, now I'm going to study. Is it the back end knowledge for doing this? If we correlate with our Indian philosophy, it is Jnana Mudra is always tell that when your index finger and when your thumb are meeting at a particular point and there's slight pressure, the nerves which is leading to a meditative state of mind get stimulated. I see. So yeah. all those have some different techniques. Okay. So, but one of the best, you can use any other technique. You can use either tinkling, but in NLP you can do anything. Okay, ऐसे करने से मेरे को concentrate. I am comfortable doing this. I'm comfortable doing this. It can be anything. Okay, so this can be done. So you can either ways make a, but it should be very simple. अगर जो आप ऐसे से कर रहे हो तो examiner will not have any problem ना कि आप ऐसे कर रहे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम है. आप कुछ अलग करोगे तो there can be a problem. So be very specific with what technique you are using. Right. So we've seen and two one techniques. More thing I wanted to talk about affirmations is always say the affirmations जो हम लोग goal complete कर सकते हैं. आज मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं अंबानी ही हूँ. तो sorry boss. Always set the affirmations which you can do it, which you know that yes, these are reachable. Okay, so the affirmations should be reachable. This can be a second technique. Okay, I'm loving to talk about these techniques. So one more technique we can talk about is water carries memory. Do you know about this? So water carries memory is again a nice thing. It has been scientifically proved by a Japanese scientist, Dr. Mazak. So he has proved it. You can anyway Google it out. Ki water carries memory, and you will get an N number. We are running short of time, so you can get an N number of examination. So what we can do it is, whenever you are studying or whenever you're doing something good, just keep a glass of water in your near place and let it get that meditative state of mind. Jo bhi aap positivity, thank you. What I did with my children is I wrote on their bottle, thank you and love. So whenever you are reading, whenever you're drinking water, you read it, thank you and love. You go into that immediate state of mind of gratitude, of love. So you can write anything positive in your where you can get it, where it is very visible for you, especially on your water things. So that is also again an gratitude thing. What we can have it. Water carries memory. So, and this is what we as a student, what we can write over our water bottles or this thing, that I'm stress free maybe, or I'm positive. Stress free is again a negative word.
Okay. Okay, Okay. because we are using stress and then we are using a word free. Rather than Okay. making us stress free, usually I am happy or I am Positive. confident, Huh. positive. I'm positive. So All you're right. getting it how you can play with words, Right. Got it. Got it. right? Yeah. Great. So So, that I mean, is one of I the remember, questions. when I used to stay in UK, so I used to go to one minster, like church, right? So there was this kind of toy they used to give. I mean, it was not given, I mean, but I took it. So there were toys to fidget there, just like this. I mean, just like that. And I really liked it. So I asked there that why did you, I mean, why are you keeping such kind of stuff, which, I mean, it has no meaning. If you see like this, it has no meaning. And then the answer which I get from them is like, so whenever you are hearing for the God, I mean, जो भी आप सुन रहे हो या आप संडे सर्विस के लिए आए हो एंड कुछ भी आप सुन रहे हो, तो आपका मन भटकता है, तो मन भटकता है, तो यू टेंड टू लुक एट योर सेल फोन्स रादर देन डूइंग दैट, फिजिट इट। तो ये ऐसे ऐसे फिजिट करते रहो, तो कुछ तो मतलब जो आपने बोला कि चिन्ह मुद्रा या फिर कुछ तो करते रहो इसके। सो आई नाउ आई कैन को रिलेट विद इट कि हाँ, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। आई मीन, ये कितना साइंटिफिक है। तो ये हल मिंस्टर में मैंने, हल इज द प्लेस का नेम, और वहां का मैंने ये वो लेके आई, मतलब कैन आई प्लीज टेक इट विथ मी। आई मीन, एज बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और मुझे समझ आता है कि देखो, हम जब बैठे रहते तो बिना ऐसे पैर हिलाते रहते हैं या फिर कुछ करते हैं, दैट शोकेस कि आप कहीं तो स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, कहीं तो आप एंजाइटी हो रही है, या फिर आप बजाते रहते हो ऐसे टक 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 टक। तो दिस इज अ वे वेयर आई कैन काम माई सेल्फ। ओके फाइन, इसका मतलब ये है कि दिमाग में बहुत सारा कुछ कुछ चल रहा है, एंड इट वॉज लाइक लाइंग नियर टू माई डेस्क एंड आई कुड रिलेट कि अच्छा हाँ, ये किया मतलब मेरा एंजाइटी कम हो रहा है, दैट्स हाउ। ये किया तो आपका I mean, that's the signal your That's body a gets that. gymnastic area. Yeah, yeah, nice. So But Amrita, now, I have a see, question here. Ki now that before you we come up to yeah, question, let yes, me tell you one thing. See, this toy, what you were using, that is to release your anxiety or release the other thoughts of mind. And what I was telling you about this, okay, both are kinesthetic, huh? But see the difference. This I was telling you to go into that state of mind where you want to go into that state of mind. correct, So you correct. getting the difference? Right, Ah, so right. So that's a that nice was you more got the positive. toy. Yeah. So I want to ask something is like, often now it happens to me also. Often we make some chart, timelines. This has to be done by this has to be done by that. सोचते बड़े हैं, लेकिन हमेशा वो होगा ही जरूरी नहीं है। कुछ रीजन खुद के वजह से, कुछ किसी और के वजह से, कुछ कहीं और के वजह से, एंड फिर वो गिल्ट आ जाता है, यार अब तो मेरी रिवीजन शुरू होनी थी, अब तो मेरा ये फर्स्ट भी कवर नहीं हुआ है, अरे अभी तो मेरे क्लासेस भी कवर नहीं हुए हैं, अब मेरा क्या ही होगा। और फिर वो चलते बढ़ता है। तो ये जो गिल्ट आता है, जो आपने बताया कि विजन बोर्ड या फिर टाइम लाइन बनाओ, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टू टाइम लाइन बनाओ, और आप कहाँ पहुंचना चाहते हो वो वहां पे आप ऑलरेडी पहुंच गए हो, ऐसे वाले मतलब वैसा यू स्टार्ट बिहेविंग, राइट? सो हाउ टू डील विद दैट? ये कैसे करे कि यार वो गिल्ट कैसे कम करे? फिर से स्केड्यूल जब बनाएंगे फिर यहाँ करती नहीं है तो क्यों बना रही है, वेस्ट ऑफ टाइम है, व्हाट्स द यूज? सो दैट्स अ विशियस सर्कल, हाउ टू ब्रेक दैट? That's a beautiful question. Very nice question. So again, when we first thing, let me tell you one thing: never make a timeline by doing it alone yourself. Always do it with a coach, because a coach will ask you reverse questions that you don't miss out anything. Okay. Secondly, whenever you are telling me कि हाँ ऐसे हो जाता है बहुत, we try to procrastinate things. Okay. So ऐसे हो जाता है, and then you keep on thinking कि अच्छा मैंने ऐसे किया वैसे किया, वो गिल्ट व्हाट यू टोल्ड ना, वो गिल्ट आ जाता है। ट्रू। So rather than doing this into going into that guilt state of mind, only ask two questions to yourself. And you should do it every night. हाँ ऐसे नहीं कि बस आज किया 10 दिन बाद भूल गए, ऐसा नहीं। रात को बोलो, अगर जो आपने टाइमलाइन से सेट किया है वो कंप्लीटली हुआ है तो सो व्हाट, an answer to yourself, question to yourself, and answer to yourself. So what, I did not do it today, what next? What am I telling you is right now is you are coming out of the blame frame to outcome frame. Okay, there are frames. Okay,
ये ब्लेम फ्रेम है, वाई मी, ऐसे ही हो गया, वैसे हो गया, गिल्ट आ गया, ये सब ब्लेम फ्रेम है. Okay, this is all negative state of mind. But when you want to come into a positive and outcome state of mind, you need to come out of that shift from blame frame to outcome frame. So when you have to come into outcome frame, ask simple questions to yourself. So what I did not complete this? क्या क्या हो गया मैंने ये complete नहीं किया तो? What next? What next is very important. कि मुझे आगे क्या करना है? Should I sit down right now and do my work? या कल सुबह जल्दी उठ के करना है, या कैसे मुझको आगे तक मेरा मैनेज करना है, so that I am not procrastinating. So this is again a beautiful NLP technique from going on outcome frame पे कैसे आना है from the blame frame of. Okay? That's nice. I mean, ये जनरली हमारे सबके साथ होता है, एंड वी शुड ट्राई कि यार वो प्रॉब्लम फ्रेम में ना अटकते हुए यू गो टू सोल्यूशन फ्रेम, सोल्यूशन ओरिएंटेड रह सकते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, अब उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, विदाउट क्रूसिफाइंग योरसेल्फ, विदाउट पेस्टरिंग योरसेल्फ, और विदाउट बीइंग सो क्रूअल टू योरसेल्फ. थोड़ा सा इजी, आप ह्यूमन बीइंग है, हम इजी, इट्स नॉट अ मशीन. फीलिंग्स आते हैं जाते हैं, बट हाउ टू लुक एट इट कि अच्छा फीलिंग्स आए, पासिंग बाय है, जैसे क्लाउड्स आते जाते, हाँ आते जाते, डोंट गेट स्टक इज व्हाट आई would rather draw from this. And anything else that you would love to tell us, that you know कि कैसे physically इसमें हम see mind eats body, body eats mind. कभी कभी लगता है कि अरे हाँ आज बहुत पढ़ेंगे, ये जोर से शोर शोर से पढ़ेंगे, और फिर पीठ दर्द होना शुरू हो जाता है. जब आपकी पीठ दर्द नहीं है तब मन को बोर होना शुरू हो जाता है. तो हाउ टू ब्रेक थ्रू दैट? Yes. First, let me tell you one thing. When you talk about a body, it is your physical and mind. इसको लोग है ना divide कर देते हैं. No, they are not separate. They are one entity. Mind and body is one entity. For example, अगर जो बहुत stressed हो, हाँ, you're actually very stressed with your work. You're not going to look like this, no, smiling. Oh, I'm very stressed. Wow, I'm very stressed. ऐसे तो नहीं करेंगे. And then you are very happy, excited हो, आपको first year का result आ गया, you clear all your subject. आप ऐसे तो नहीं बैठने वाले हो. Oh my God, मैं clear हो गया हूँ. Getting it? What I mean to say here is your mind and your body has to go hand in hand together. So when you change your physical attitude, you change your mental structure. And similarly, when you change your mental structure, you change your physical attitude, your physical body part. Changing your mental structure becomes a bit difficult sometimes when you are not an NLP trainer or a practitioner or a coach. So it becomes difficult to change your mental structure, but you can easily change your physical attitude. For example, काफी पढ़ाई कर ली and you said backache हो रहा है. Change your postures. When you have a backache while you are studying, it means you are into a wrong posture. This is what a doctor would tell you. So you change your posture. अगर जो आपको ऐसे हो रहा है कि अच्छा 2 घंटा बैठ गए, concentration level कम होते जा रहा है, stand up, jump at your place. Okay? हम बचपन में जब jump कब करते थे, जब हम लोग बहुत खुश हो जाते थे. तो you're jumping, जैसे आपने first example दिया था, you get connected to your बचपन. किसी ने first आने को बोला था. Similarly, jumping, you're getting connected to your bachpan of happiness. You come back to a different state of mind. Okay, this can be different for different people. मेरे को शायद ताली बजा के खुशी हो जाती है, मेरे को ताली बजा के I change the state of my mind. किसी को jump करके होता है, किसी को आंखें ऊपर करके, किसी को roll करके. It can be different for different. Find out what is your stress, physical stress buster today itself. It can be any damn thing. Okay. या सो जैसे अपनी दादी बोलती थी काउंट करो 0 आई मीन 1 to 10 करो गुस्सा. आई मीन ये टेक्निक्स हमारे पास बरसों से अपने पास है, बट जस्ट वी डोंट नो हाउ टू यूज इट व्हेन. एंड इतने सारे इफेक्टिव टेक्निक्स है. राइट, that is right. what the NLP practitioner did. वो मॉडल निकाले and they have shown it कि ये, and these are very effective, Very fast effective. and effective. Right. So who better than
Dr. Amruta can vouch for it because I've seen her taking at such a great platform. अभी जो उन्होंने recently लिया था वो 1523 लोगों को उन्होंने change किया है, उनके transformation देखे हैं, उनके feedback मैंने देखे हैं. So if you have any questions, any tools and techniques, deep dive देखना है, खुद पे करते हुए देखना है, तो she is very well placed in Pune and you can very well get in touch with her. I'm sure Dr. Amruta will be happy to help us in that way. And जो mentorship programs में लाने वाली हूँ उसमें तो definitely Dr. Amruta will be there. So कभी कभी हमें थोड़ा सा clinical help भी लगता है, कभी कभी कुछ root causes बहुत deep dive रहता है कि जो बस हाँ ऐसे बोलने से हाँ ताली बजाओ, ये बजाओ, वो बजाओ या फिर ये करो, उससे नहीं होता है. It got to be addressed, right? So ऐसे कोई चीजें रहती है and वो social stigma जो है, वो जो taboo है, वो तोड़ने के लिए onboarded Dr. Amruta तो रहने ही वाली है मेरे साथ. So on that note, I had a very great time, Dr. Amruta, talking to you, talking about those. First of all, I came to know who am I. I'm a visionary person, kinesthetic person. I mean, I've heard that, but now I became more conscious when I'm saying, "Huh, you see for yourself, or maybe vouch for yourself, or vision board, right?" So know for yourself who you are. What are your predominant qualities, right? मतलब आपके preferences क्या हो सकते हैं? That is predominant preferences. Let me put it that way. So that predominant preferences, I am going to share that PDF which Dr. Amruta graciously agreed to share with us. So that you can see. Then second thing, then decide on yourself that how you, अगर आपको सुन के अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है, चार्ट बुक पर के अच्छा लगता है. So that is another handy tips and technique for you to have effective study methods. And third चीजों में तो हमने बहुत सारे चीजों में बात किया कि that chin mudra, like anything that's not really chin mudra, jnana mudra that we are talking about, but anything that I talked about this toy, but that is for different perspective. So anything that gives you that booster, right? So that's number fourth. And then affirmations, right? Affirmations, present positive affirmations. Present, abhi. मैं करूंगा नहीं, मैं already chartered accountant हूँ, right? So that's how you have to tell it. Like आप अमृता मुझे ये भी बताते थे कि रात को सोते समय sleep talk भी करना चाहोगे, right? तो sleep talk देना चाहे, तो ये बहुत सारे इनके सीक्रेट्स पता है, लेकिन टाइम कम है तो आई कैन नॉट, आई मीन दो आई वुड लव टू टेल ऑल ऑफ दिस, बट इसके लिए हम और भी ज्यादा डिटेल लेवल पे लेके आएंगे डॉक्टर अमृता को. सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू. पॉजिटिव अफर्मेशन हो गए, आपके मैजिक टेक्निक्स हो गए, एक बार करके देखिए, ये आईने वाला चीज है ना. जैसे डॉक्टर बोल रहा है कि वो डिफिकल्ट है, तो मुझे भी बड़ा डिफिकल्ट गया था, जाता है अभी भी, बट एक हीलिंग प्रोसेस है, वो होता है. आप करके देखिए और हमें बताइए कमेंट्स में कि हाउ डिड यू फाइंड इट. डिड यू फाइंड इट रियली हेल्पफुल, या आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए, या फिर आपको अच्छा लगा, या सुन. बट commitment is the thing, right? Every day करना चाहिए, एक दिन क्या और छोड़ दिया ऐसा नहीं होगा. That is another technique which she talked about. And then we spoke about कैसे आउट, आई मीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से बाहर आके सॉल्यूशन फ्रेमवर्क में आपको जाना है. पानी जो अपन पीते हैं उसको कैसे हम चार्ज करते हैं, यू बिलीव इट. देखो कुछ चीजें ना, कुछ मान के चलनी चाहिए, कुछ जान के चलनी चाहिए. ओके, तो मान लो कि ये टेक्निक है मतलब लोग फॉलो कर रहे, डॉक्टर अमृता कर रहे, तो है पानी से क्या होगा. अरे करके देखिए, जो बोलते हैं ना वो घड़ी, डिटर्जेंट, केक, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए. तो करके तो देखिए एक बार, क्या होगा. कुछ नहीं होगा, राइट? आपको नहीं समझेगा, लेकिन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपके आजू बाजू के लोग हैं उनको जरूर समझेगा. तो कुछ जान के चलिए, कुछ मान के चलिए. तो कुछ मान के चलिए, तो वो वाटर थेरेपी करके देखिए और हमें बताइए. वी विल, है ना डॉक्टर अमृता, विल बी eagerly waiting for your responses. How did you find it? And अगर कुछ confusion है, कुछ ये है, you know where to reach out to us. So thank you once again, Dr. Amruta, for your precious time, for sharing. I'm sure it's just tip of the iceberg. इतना सारा knowledge है, वो 20 मिनट 30 मिनट में समेट पाना is just not, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम. तो हम we look forward to invite you on this platform more and more for more such chats, for more such information. And it was lovely to talk to you here as on the here. Thank As you yeah. so much. The pleasure is all mine. Actually, I like conversing, and it would be great if all your students come up with such a nice ideas or something. Like in our comment box, we are actually waiting for it.
Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. And for more such updates, for more such video, you know what to do. Share, subscribe, and watch us, right? Thank you. Good luck. Very well hydrated रहो. और कैसे बताया अभी डॉक्टर अमृता ने, वैसे हाइड्रेटेड रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बातें तो करते रहेंगे, isn't it? Thank you so much. On that note, see you next time. Bye. Bye-bye.